The problem with gender is that it prescribes how we should be rather than recognizing how we are. Imagine how much happier we would be, how much freer to be our true individual selves if we didn't have the weight of gender expectations. Hi, salam, namaste. This is another री recommends. मैं recommend करती हूँ एक ऐसी किताब, और बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जो मैं रेकमेंड करती हूँ, लेकिन आज मैं अगस्त की एक किताब लेकर आई हूँ. दैट वन बुक दैट यू मस्ट रीड if you're watching this in August 2021, or if you're watching this at any point of your lives, because it is that kind of a book that needs to be read in whatever world you live in whatever period of time you live in. उम्मीद तो यही है कि एक ऐसा वक्त बहुत जल्द आएगा जब इस किताब की ज़रूरत ही नहीं होगी. एंड दिस इज़ वॉट द राइटर herself says, that she says that I hope that this essay, this speech and this book are not needed very near in the future, because that is what she aspires to do with her work. I'm talking about Chimamanda Ngozi Adichie's We Should All Be Feminists. Point number one, why you should read this book is because it's all of some odd 45 to 50 pages. 45 to 50 pages is nothing. It's nothing when it comes to reading books. It is nothing when it comes to the sheer fact of reading, experiencing and understanding something which is so essential to our existence, so essential to whatever society we inhabit. मतलब ये तो बहुत ही ताज्जुब की बात है, और शायद इसके बारे में हम इतना सोचते भी नहीं हैं, समझते भी नहीं हैं कि ये क्यों है. ये बहुत ताज्जुब की बात है कि ये किताब एक नाइजीरियन औरत ने लिखी है. इट्स रिटन बाय दिस नाइजीरियन वुमन राइटर, and yet it is a book that all of the world needs. बहुत ज़रूरी है ये समझना. Okay, let's begin by deconstructing a few myths. हाँ, deconstructing a few constructed theories जो कि present किया जाता है कि यही सच्चाइयाँ हैं, this is the ultimate truth, but it's actually not the ultimate truth. The ultimate truth is just me right in front of you. The ultimate truth is just my existence and not my gender. तो एक बहुत साफ फ़र्क होता है जेंडर और सेक्स में, right? I got to know this in my college. I did not realize the importance of this difference until I was out of my college. So it took me 3 years to really realize what gender has done to us as a society, us as a community and us as a race. जेंडर क्या होता है उसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप समझ लीजिए कि लिंग क्या होता है. लिंग क्या होता है, जिसे सेक्स बोलते हैं इंग्लिश में. लिंग होता है वो एक हिस्सा आपके जिस्म का, आपके शरीर का, जो आपको कुदरती तरीके से दिया गया है. सो इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी नेचुरल टू यू. That is ling, that is sex, right? It's broadly divided into, of course, penises and vaginas, but of course there is a lot of variation also that comes in sex. What is gender? Gender is a construct. Construct का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो कुदरती तरीके से वहाँ नहीं थी, वो सिर्फ एक कम्युनिटी ने, एक रेस ने बना दी. कंस्ट्रक्शन, एक बिल्डिंग का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको आकार मिलता है, राइट? हमारा शरीर जिस तरीके से बना हुआ है वो हमारा नेचुरल आकार है, लेकिन जेंडर एक ऐसा आकार है जो हमें नेचुरली नहीं मिला था. ये एक रेस ने कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया है, बहुत बनावटी है ये. विच इज़ वाई इट इज़ the most problematic construct that defines so many other problematic areas in a society. सबसे बड़ी चीज़ जो वो करता है वो है कि औरत और मर्द में जो कुदरती तरीके से फ़र्क नहीं है
वो उन दोनों के बीच में लाकर रख देता है. एंड दैट इज़ वाई दिस बुक इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी कम्युनिटी that inhabits this world. And that is also precisely why it is the most unfortunate reality that Chimananda writes in this book. And in, of course, the speech that she gives. वो यही है कि क्यों जेंडर ने हमें इतना असहाय बना दिया है कि हम जो फ़र्क औरत और मर्द के बीच में किया गया है उसके बियॉन्ड ही नहीं देख पाते हैं. एक ऐसा फ़र्क जो इनिशियल स्टेज पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है. इट इज़ सच अ डाइकोटमी. इट इज़ अ रैडिकल जक्सटापोजिशन. ओके, सो दिस बुक, व्हाई इज इट सो थिन? मतलब देख लो, इतनी पतली किताब है ये किताब इतनी ख़ास इसलिए है क्योंकि ये हर उस सच्चाई को बताती है महज 50 पन्नों में. इट गिव्स ऑल दोज ट्रूथ्स इन अ मैटर ऑफ जस्ट 50 पेजेस. ऑल ट्रूथ्स दैट वी फाइट थ्रू आवर लाइव्स डिनाइंग. हम उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ द श्योर फैक्ट दैट वी नो दैट दीज आर ट्रूथ्स वी मस्ट एक्सेप्ट, बट वी डू नॉट वॉन्ट टू फाइट द सोसाइटी दैट we do not want to fight the society that we inhabit. We do not want to make our lives uncomfortable going out of the labels that have been attached and assigned to us by birth. Gender is a construct that is given to you after you take birth, right? Not before you take birth. You will never be levied with all those construct, all those responsibilities while you are in your mother's womb. Never. But of course you do have a sex in your mother's womb because that is something which comes natural to you. That is something which is a part of your body. Okay, so we should all be feminists. Now it's why is this book named We Should All Be Feminists? Why is it a statement and not a question? It could have been why we should all be feminists. No, because Chimananda says that feminism as a movement, as a reality, is needed. It's not a want of the society, it's a need of the society. एक समाज को, एक मुआशरे को उसकी ज़रूरत है और उस मुआशरे की औरतों को सबसे बड़ी उसकी ज़रूरत है और उसके मर्दों को भी उतनी ही उसकी ज़रूरत है. एंड देन शी लिस्ट्स व्हाई men are the gravest of all victims caught in the claws of patriarchy. And why men need feminism more than women do. क्यों मर्दों को इक्वालिटी की औरतों से ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि जो ओप्रेस्ड होता है ना, उसको हक की तो ज़रूरत होती ही होती है, लेकिन जो उस ऑपरेशन में इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहा होता है ना, उसको उस हक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि उसके साथ गलत हो रहा है इन द फर्स्ट प्लेस. जिस पर तशद्दुद हो रहा होगा, जिस पर शोषण हो रहा होगा, उसको तो पता होगा कि मुझ पर निशान है क्योंकि मुझ पर डायरेक्टली शोषण किया गया है. लेकिन जिस पर शोषण हो नहीं रहा, लेकिन उसके मानसिक स्तर पर वो बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा है, उसे तो पता ही नहीं है कि उस पर भी वायलेंस इन्फ्लिक्ट हो रहा है, कि उसके साथ भी नाइंसाफ़ी की जा रही है. And that is why feminism is needed for men more than women. I will, of course, because I want you all to read this book, बहुत जज्बे के साथ मैं चाहती हूँ कि आप ये किताब पढ़ें क्योंकि ये एक ज़रूरत है आपके लिए. जब आप ये पढ़ लेंगे ना, तब आपको आपकी ज़रूरतों का इल्म होगा, उन ज़रूरतों का पता चलेगा. नहीं पढ़ेंगे तो फिर ज़िंदगी उन लेबल्स में ही बिता देंगे, राइट? So this book is essentially a written document of a speech that Chimananda gave as a TED Talk. There was a TED Talk organized in, I think, Ethiopia. Yes. So it was a collaboration between TED as an organization and people who have a voice in Ethiopia. And Chimananda was one of them because she is a prolific writer and not a woman writer. Although she stresses on the fact that being called a woman writer
is fine because at one point of time she was told that don't be labeled as a feminist because then you will not get husbands to marry. And eventually she says that then she called herself a happy feminist who is interested in men and who can possibly be attracted to men and men can be attracted to her as well. And then someone told her that feminists have no associations to the female attributes that a woman likes: putting a gloss, wearing heels, making your hair, doing some makeup. All of this is something which feminists do not do, and that is why she says that at one point of time I started calling myself a lip gloss wearing, heel wearing, wanting to do makeup kind of a feminist, because that is feminism too. Feminism is not male bashing. Feminism is not, I will not wear a bra. Feminism is not, I just want men to be eradicated off the surface of this earth. That is not feminism. The ultimate force who has made us has made a man and a woman intellectually equal. Yes, there are differences in our etymology, in the etymology of our body, in the constitution of our body. Yes, men are physically stronger than women, although women bear the most amount of pain when they bear a child, which a man can never bear because a man does not have the threshold to bear that pain. Yet, physically, a man is stronger than a woman. But that is no reason to put down a woman wherever intelligence is involved.